बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज फरजाना शाहीन फ्रॉम ब्रेन ट्रेन। आज हम कर रहे हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लेवल 1 लेसन 4 चौथा सबक, और इसमें हम सीखते हैं कि आवाज़ों की मदद से किस तरह से पढ़ते हैं और इसके बाद सवालों के जवाब कैसे तलाश कर सकते हैं आप उसमें से, ये आपको गाइडलाइन दी जाएगी। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। The thin pin can spin. Family है आज in. It's in family. Words mostly in at the end. You can see here, here, here. So ज़्यादातर लफ्ज़ जो है वो end पे in आ रहा होगा. Let's start. This पिछले लेसन में आप काफ़ी ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर चुके हैं. You should remember. It should be in your mind. So this is a p sound, in, pin. This is a pin. This is a pin. This pin is thin. This pin is thin. Th makes th sound. Th, in, thin. Thin, patli. It is made made of tin. It is made of tin. What can the pin do? What can the pin do? Pin क्या कर सकती है? The pin can spin. Spin का मतलब होता है घूमना. The pin can spin. घूम सकती है. I like to win. Win जीतना. I like to win. मुझे जीतना पसंद है. My fast car has fins. My fast car has fins. Fins क्या होते हैं? ये आपको नजर आ रहा है? ये इस तरह से जो बने होते हैं ये fins कहलाते हैं. The fins are made of tin. Fins. The fins are made of tin. I win in my car with tin fins. I win in my car with tin fins. The pin and the fins are made of tin. These all words are from the previous lesson, previous page. यानी पिछले जो पेजेस हमने 2 पढ़े हैं उनमें से ही ये लफ्ज हैं सारे के सारे. So if you remember them, you can do these easily. The pin and the fins are made of tin. tin के बने हुए हैं. The pin is thin पतली. The fins are not thin. pin पतली सी है और fins जो है वो पतले नहीं है, बारीक. The pin spins. The fins win. pin जो है वो spin करती है, घूमती है, और fins जो है वो जीतते हैं, यानी जीतने में हेल्प करते हैं. Now let's see the questions.
क्वेश्चन इज what is the pin made of? I think you already know कि आंसर क्या होगा, right? So let's see. पैराग्राफ में से देखते हैं, तो मैंने हाईलाइट कर दिया इसको पहले ही ताकि पता चल जाए। वैसे आप सारी पढ़ के देखेंगे कि कौन सा हो सकता है। मेड ऑफ की बात हो रही है, तो इट इज मेड ऑफ टिन। इट यूज हो रहा है पिन के लिए, सो वी कैन यूज इट ऑल्सो जब आंसर करना हो। दिस इज द आंसर, सो लेट्स राइट इट। द पेन इज मेड ऑफ टिन। कहाँ से स्टार्ट किया आपने? क्वेश्चन में आपने इज के बाद से शुरू करना है। द पेन और फिर इज यहाँ पे आ गया। मेड ऑफ, ये मेड ऑफ लिखा दिया और किस चीज की बनी हुई थी? टिन। सो द पेन इज मेड ऑफ टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द फास्ट कार हैव? फास्ट कार के पास क्या है? कौन सी चीज है उसके अंदर? सो द आंसर इज माई फास्ट कार हैज फिन्स। इसमें फिन्स हैं। So the fast, because question में fast car लिखा हुआ था, the fast car, इसको हमने यूज किया। the fast car has fins. Then what can the thin pin do? thin pin क्या कर सकती है? बारीक सी पिन जो है ये क्या कर सकती है? So answer was here. The pin can spin. spin कर सकती है, गोल घूम सकती है। So answer is here. The thin pin can spin. So again we are starting from here. और first letter always capital, बड़ा A जिसको कहते हैं आप, capital होगा T. The thin pin, तो can इसके बाद आया, चीज के नाम के बाद आता है, can spin. So this is the answer. The thin pin can spin. Thank you so much. आज का लेसन इसको बार बार पढ़िए अगर समझ नहीं आया। अगर आ गया दैट्स द परफेक्ट थिंग, वंडरफुल। अदरवाइज इसको आप रिपीट करेंगे, बार बार देखेंगे तो आपको पढ़ना आ जाएगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ ताकि सबको फ़ायदा पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।